Good morning, friends. Welcome to Inspeech series, the daily talk show. My name is Gyanendra. I am basically from Unnao, Uttar Pradesh. Currently, I am in Bangalore and I work in IT industry. I have a decade of experience. My mentor is Mr. Brajesh. Grit to Glory Inspeech is an initiative taken by Grit to Glory Personal Growth Community और जिसका एक ही पर्पस है reach as many people as you can and help them to become their best version. तो इन स्पीच सीरीज में आज मैं बात करूंगा कि how can we think creatively and how can we become creative. So when you hear the word creativity, आपके दिमाग में क्या आता है कि I have to invent something, कुछ बहुत बड़ा आविष्कार करना है. I have to be something. I have to be a scientist. I have to be a doctor. I have to be an artist. या फिर हमें इंजीनियर होना है, या फिर हमें पेंटर होना है, या फिर हमें किसी ऐसी पोजीशन पर होना है कि जहां पर बैठ के मैं कुछ ऐसा इन्वेंशन कर दूंगा which will impact the entire world. Yes, शायद आपके जो एग्जाम्पल हैं वो सही हैं, but these are the examples of creative thinking. But in simple terms, creative thinking is not the inventing something new or making something very big which will impact the entire world. Creative thinking का simple शब्दों में ये मतलब है कि doing the things in a better and improved way. So no matter what job you do, what task you do, whatever you are doing, just doing that thing in an improved and better way is an creative thinking. Example लेते हैं कि अगर आप टीचर हैं और आप बहुत समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो क्रिएटिव थिंकिंग क्या होगी कि हाउ टू फाइंड अ वे जिससे हम स्टूडेंट से और भी ज्यादा अच्छे तरीके से कनेक्ट हो सकें और उनको इजी तरीके से चीजों को समझा सकें. मे बी आप कुछ डायग्राम यूज कर सकते हो, मे बी आप कुछ 3D डिजाइन्स यूज कर सकते हो, मे बी आप इंटरैक्टिव सेशन रख सकते हो, ज्यादा क्वेश्चन पूछ सकते हो, या फिर उन्हें सोचने को कह सकते हो. इंस्टेड ऑफ गिविंग देम डायरेक्ट आंसर, आस्क देम द क्वेश्चन एंड देन ask the possible answers for them for that question, right? अगर आप इस तरह से कुछ एक्सपेरिमेंट करोगे, कुछ चेंजेस करोगे, that will make your class engage. So that's again a creative thinker. अगर आप घर का काम करते हो, just see how can you adjust the thing, do some experiment, change few things और देखिए कि क्या हम घर को अच्छे से डेकोरेट कर सकते हैं. So it doesn't matter what your profession is, आप जो भी काम कर रहे हैं उसको बेटर तरीके से करना ही क्रिएटिव थिंकिंग है. अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि शायद हमारे पास आइडिया नहीं है, या फिर हमें पता नहीं चलता कि हम कैसे क्रिएटिव काम कर सकते हैं. हम तो बहुत दिन से ऐसा ही करते हुए आ रहे हैं. सो आज मैं बात करूंगा कि हाउ कैन यू बिकम अ क्रिएटिव थिंकर. सो जो सबसे पहली चीज है वो है बिकम रिसेप्टिव टू आइडियाज. बी एन स्पॉन्ज. जो भी आपको नया आइडिया मिलता है, इंस्टेड ऑफ सेइंग दिस विल नॉट वर्क, दिस इज यूजलेस, ये तो सब बकवास है, ये तो हो ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल, रिजेक्ट दीज रिजेक्टिंग थॉट्स. सबसे पहला काम हमें करना है कि रिजेक्ट दीज रिजेक्टिंग थॉट्स. एंड नाउ वंस यू रिजेक्ट दीज थॉट्स, स्टार्ट थिंकिंग हाउ कैन यू डू दैट, राइट? आस्क अ क्वेश्चन, हाउ कैन आई डू इट बेटर, हाउ कैन आई डू इट बेटर, व्हाट एल्स कैन बी डन, इसको हम और इंप्रूव कैसे कर सकते हैं. When you continuously ask this question, so I have been doing this for a long time, now let's do some experiment, let's change something, see what's going to happen, right? Ask this question first, tell yourself that this is possible and now I'm going to find a new way to do it. When you ask these questions, when you ask the ideas what others are giving you, it will help you to accept new ideas and do something new. कई बार क्या होता है ना, किसी ने हमें एक अच्छा आइडिया बताया, बट क्योंकि हम एक ही चीज को लंबे टाइम से करते हुए आ रहे हैं तो हमें लगता है ये सब तो बकवास है, ये सब तो हो ही नहीं सकता. और कुछ दिन बाद क्या होता है कि देखते हैं कि कोई उसी आइडिया पे काम करके आगे निकल जाता है. तो पहली चीज हमें क्या करनी है, अगर हमें कहीं से कोई नया आइडिया मिलता है, एक्सेप्ट इट एंड देन आस्क योरसेल्फ हाउ कैन आई डू इट बेटर, व्हाट चेंजेस आई कैन मेक. सो दैट विल हेल्प यू to become a sponge, be like a sponge which accepts everything, which receives everything. So that is the first thing. And then start believing in yourself. Now this one is more important. Start believing in yourself, because when we start believing, our mind comes into motion and it tries to find the way how can we do it.
So that was the first point. Now अब इससे interlinked secondary point है become an experimental person. Now this is really interesting. आप सब लोगों ने सुना होगा कि जब बल्ब का आविष्कार हुआ था उसके पहले 10,000 एक्सपेरिमेंट फेल हुए थे. Now the question is कि 10,000 एक्सपेरिमेंट कोई कब करेगा? पहली चीज, जो पहला पॉइंट है कि जब उसे विश्वास होगा कि समथिंग कैन बी डन, then only you will do next experiment even after failure, continuous failure. So become an experimental person. अब हो सकता है कि आप इतना बड़ा काम ना कर रहे हो, आपको लगता है कि हमारा तो कोई ऐसा काम है ही नहीं जहां पर हम बल्ब जैसा आविष्कार करने जा रहे हैं. Now think about some new things. आप जिस तरह से आप अपना रेगुलर काम करते हैं, make some changes in that and see what happens. अगर आप कुकिंग करते हैं तो थोड़ा सा वेजिटेबल्स, थोड़ा सा मसालों को मिक्स करके देखिए what taste it is giving, right? One bad thing can happen that you may fail, something can be spoiled in this, but the good news is you may find and you will definitely find a new and improved way of doing it. So become an experimental person. आप अगर रेगुलर बाहर वॉक के लिए जाते हो, just try to change that place. थोड़ा सा आगे जा सकते हो, किसी बड़े पार्क में जा सकते हो, या फिर आप जिस तरह से आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं आप उसको उस रूटीन को चेंज कर सकते हो. अगर आप हमेशा लेट से उठते हो, जस्ट ट्राई टू गेट अप 1 hour अर्ली. दैट्स एन एक्सपेरिमेंट एंड सी व्हाट काइंड ऑफ बेनिफिट्स यू आर गेटिंग. तो जो भी आप काम कर रहे हो, जस्ट ट्राई टू डू सम एक्सपेरिमेंट. अगर आप घर पे बैठ के काम करना पसंद करते हो, बाहर लोगों से नहीं मिलना पसंद करते हो, जस्ट गो आउट एंड मीट न्यू पीपल. Talk to the people who are not in your department. You will get some idea. You will come to know that how other people are thinking, what they are doing, right? That will give you a totally new perspective. So first and second point, they are interrelated. So accept the ideas and then become an experimental person. Now the third thing is what will make you really creative, that be progressive. अब प्रॉब्लम क्या होती है कि ये तो कई बार आपने सुना होगा ना, ये तो हमारे फैमिली के कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ है, ऐसा तो हम पिछले 10 साल से करते हुए आ रहे हैं. दिस इज माय फैमिली बैकग्राउंड एंड आई एम गोइंग टू डू दिस ओनली. नाउ दिस काइंड ऑफ थिंकिंग विल नॉट लीड यू एनीवेयर. दिस काइंड ऑफ थिंकिंग विल नॉट लीड यू एनीवेयर बिकॉज हो सकता है कि जो पिछले आप 10 साल से करते हुए आ रहे हो, दैट इज नो मोर रिलेवेंट टुडे. सो थिंक अबाउट प्रोग्रेस. अगर आप सोच के देखिए, आप मुझे अगर लाइव देख रहे हैं, अगर किसी ने प्रोग्रेसिव थिंकिंग नहीं डाला होता, सो वाज इट पॉसिबल कि मैं यहां पर बैंगलोर में हूं और आप जहां से भी देख रहे हैं, वाज देयर एनी वे टू कनेक्ट? नो, राइट? बट समबडी हैड थॉट कि लेट्स कनेक्ट विद द पीपल हु आर एट डिस्टेंट प्लेस एंड नाउ वी आर एबल टू टॉक, ऑडियो कॉल्स, वीडियो कॉल्स, लाइव. एंड दिस इज हैपनिंग only when we have started thinking progressively. Now it's a COVID time, right? Earlier, going to office was the only way to work, but now almost everyone, like people, especially people who are in IT industry, they are able to work from home. That's a new way of doing the things, because इसके पहले लोगों को लगता था कि ये possible नहीं है, but now see things are smooth. Yes, definitely there are some problems. So think about how can we become progressive? How can be the next version of ourselves? So, to summarize, what we have to do to become a creative thinker: first, receive the ideas, be receptive to the ideas. Instead of thinking it's useless, bakwas hai, time waste hai, start saying it's possible, it's a new way of doing things. Let's see what best it can give us, what are the good results we are going to get. The second thing is that be an experimental person. Do small experiment, and once you start doing small experiments, you will get courage to do the big experiment. And the third point is be progressive. Even though nobody has done in your family something new, you can be one of them. So now if you are watching me on the Facebook or YouTube, or you have got this video from somewhere and you are thinking, even I want to improve, even I want to talk, I want to improve my communication skills. Yes, definitely you can be a part of our personal growth community, Grit to Glory. You can drop us a message and even you can be a part of it. Thank you so much. I hope I have added some value. So if you want to watch all the videos, you want to listen all the talks, you can also join our personal growth community, Grit to Glory, and you can also become
a speaker in it, and you can also improve your skills. Thank you so much.